Indiacharts, the truth about the markets. Indiacharts publishes Nifty Daily, daily video updates, the weekly elliotwave outlook, and the long-short report covering all asset classes. Hi everyone, 23rd of February 2022. This is going to be a mix of thoda bahut Hindi mein and a little bit in English. So I cannot really do two separate language podcasts, but I will try to mix up a little. So bear with me, थोड़ा मजा आएगा क्योंकि मार्केट के जो उतार और चढ़ाव हैं उनको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ. So what really happened? Interesting, 2 years after the pandemic panic, were we really expecting a major geopolitical event? Now, it wouldn't be major if this was two smaller countries. It was something happening in Libya. Oil prices would have spiked, but the whole world would not be falling apart. But if it's Russia, and then there's US on the other side provoking, which means even though it may be Russia and Ukraine, but if it involves US and then it involves China and Europe, then it is global. And so that's why markets have panicked so much, even though, as I heard on television from one of the analysts explaining that यूक्रेन की जो जीडीपी है वो तो यूपी बिहार की जितनी है, तो जब इतनी ही है तो हम लोग इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं? इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट इतना नहीं है जितना कि सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है, एंड दैट टेक्स यू इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टडी. बट बिफोर आई गेट टू द सेंटिमेंटल इम्पैक्ट, जिस पे मैंने एक बहुत डिटेल्ड पोस्ट लिखा, वीडियो भी किया है यूट्यूब पे, सो इफ यू हैव सीन दैट यू ऑलरेडी हैव द इनसाइट्स इनटू हाउ मार्केट्स बिहेव अराउंड वॉर्स and events. But what has ended up happening here is quite interesting, because first, neither Russia or US were accepting what they're really up to, because one day they were saying something, the next day they were saying something else. In fact, both were saying opposite things. Russia was saying we have no interest in going into Ukraine. The US was saying नहीं, ये अंदर घुसने ही वाले हैं. और रशिया ने ऐसा किया कि रशिया के हिसाब से तो आज भी वो अंदर नहीं घुसा है, क्योंकि रशिया ने डोम्बास रीजन को पहले अलग टेरिटरी प्रोक्लेम कर दिया. So once they've proclaimed that these are separate territories, two separate territories out there which they are really interested in, and more than interested in protecting them from the conflicts with Ukraine internally, and so they are really interested in the people of that region, because they believe that they are Russians that need protection. Now, that can be a very, very difficult issue to discuss, but they believe therefore that these are separate territories. तो सही में अगर रशिया इन टेरिटरीज के अंदर जा रहा है, उसके हिसाब से वो तो यूक्रेन के अंदर गया ही नहीं. बट यूएस अब ये भी बोल रहा है कि वो इन टेरिटरीज के आगे भी निकल सकता है. तो ये बात कहाँ तक सच है, नहीं है, कि सिर्फ एक प्रोवोकेशन है, समझ में नहीं आ रहा है. इतना तो समझ में आ रहा है कि यूएस इस वॉर में उतरने नहीं वाला है. अभी तक तो ऐसा ही दिख रहा है. वो क्या करने वाला है? सैंक्शन पे सैंक्शन. जितने अंदर रशिया घुसेगा उतने सैंक्शंस पड़ेंगे. तो शायद रशिया अगर डोम्बास रीजन के अंदर ही अपना कार्यालय करके निकल जाता है, तो शायद जितने सैंक्शंस आज आप सुन रहे हैं या थोड़े बहुत और सुनेंगे अगले 2-3 दिन में, रशियन की लोगों पे जो पर्सनल है, जो गवर्नमेंट में अथॉरिटीज़ हैं, उन पे लगेंगे. जर्मनी भी कुछ चीज़ें लगाएगा या यूरोपियन रीजन कुछ चीज़ें लगाएगा. ये सब हम लोग सुनेंगे और इसका इम्पैक्ट असेस करने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है. इसके क्या तेल के भाव पे इम्पैक्ट होगा, बिकॉज ऑयल रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट एनर्जी आउटपुट ऑफ रशिया, एंड लॉट ऑफ इट इज ऑयल एंड गैस इज कंज्यूम्ड बाय द यूरोपियन रीजन, एंड इट इज नेसेसरी फॉर देम बीइंग अ कोल्डर रीजन. सो you do not really want the supply to be cut off, or you don't want prices to go up too much. So this is a very tricky situation to be handling, and at the same time you don't want the whole world to go into war. So that means the US stating ki they actually recognize, okay, so the first step was they recognize these breakaway regions. Now I was really flipped on that, because the moment you recognize these regions, you're almost close to saying that they are not part of Ukraine. I'm not sure if that's their intention, but once you've recognized it, now you're putting sanctions based on the actions of Russia inside that region or inside the rest of Ukraine. Tricky. So if this is really the case, then is it a Russia win? क्योंकि आगे जाकर ऐसा भी हो सकता है कि एक बार रशिया ने अपना काम कर लिया, वो निकल पड़ेगा बाहर और फिर बोलेगा देखिए हमने तो काम कर दिया, हमने यहाँ सफाई कर दी है, अब सब बढ़िया है, ये दोनों इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, हम लोग वापस चले गए, अब आप सैंक्शंस धीरे धीरे हटा दो, और धीरे धीरे 1 साल 2 साल बाद अग्रीमेंट साइन होंगे कि आप ऐसा नहीं करोगे, ऐसा करोगे, और शायद ये मामला वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा.
या फिर ये मामला और एस्केलेट होगा। तो अभी तक तो ऐसा नहीं दिख रहा है, बट इतना समझ में आ रहा है कि इट्स नॉट गोइंग टू रिजल्ट इन अ ग्लोबल वॉर, बट प्रेशर पड़ा हुआ है ताकि ये एस्केलेट ना हो। और रशिया भी अपने तरफ से वही बोल रहा है कि दे रियली वांट टू प्रोटेक्ट द पीपल इन दैट लोकेलिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है जब एक बॉर्डर डिस्प्यूट होता है। हम लोग इससे ज़्यादा वाकिफ कैसे नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे बाजू में भी इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर रिलेटेड इशू सालों से चल रहा है। इनफैक्ट ये इशू ऐसा है कि हम जब इंडिया का मैप इंडिया में देखते हैं वो एक तरह बना रहता है, और कई जो ग्लोबल मैप वाले हैं वो एक जो डिस्प्यूटेड एरिया उसको काट के इंडिया का मैप बनाते हैं। तो एक रीजन हो गया है वेयर वी से इट इज़ द लाइन ऑफ कंट्रोल, एंड देन देयर इज़ अ रीजन विच इज़ डिस्प्यूटेड, एंड इट्स ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग द पीपल इनसाइड दैट टेरिटरी विच वी ऑफ कोर्स बिलीव इज पार्ट ऑफ India. So, of course, Russia has not gone that far as to, stating that these regions, breakaway regions, are part of Russia. But who knows? Tomorrow, that's what will happen once the breakaway regions have their own democracies. They will say कि हाँ भाई हमें भी रशिया के साथ जुड़ जाना है, तो दुनिया क्या कर लेगी। तो और क्या यूक्रेन उसके बारे में फिर एक अलग ही झगड़ा करेगा, या विल इट रिजल्ट इन अनदर यूक्रेन रशिया वॉर टुमारो, जैसे कि हर बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी होने का रिस्क रहता है। तो वेरी वेरी ट्रिकी सिचुएशन फ्रॉम अ जियो पोलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड सो माई ओनली एंगल टू इट वॉज टू स्टडी द चार्ट्स एंड सी कि हिस्टोरिकली what really happens when you have an outbreak of geopolitical events, there are wars and there are entries, and इस चीज़ पे मैंने एक पोस्ट लिखा और फिर एक और भी डिटेल्ड वीडियो जिसमें मैंने 4-5 इवेंट्स लिए। यू कैन टेक बोथ दी गल्फ वॉर जो कि 1990 से 92 तक हुआ, या फिर जो सेकेंड इराक वॉर यूएस ने 2001 के बाद एंट्री ली। इन सब में एक एस्केलेशन फेज था जहाँ पे सब लोग को पता चला कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये दोनों की लड़ाई झगड़े में पड़े हुए हैं, और आगे क्या होगा वो धीरे 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 बिल्ड होता गया कि एक कंट्री दूसरे को इन्वेड करेगी कि नहीं। पर हमेशा ये देखा गया कि जहाँ तक इन्वेजन होता है, क्योंकि टाइम लगता है, 2 दिन में कोई भी इन्वेजन करता नहीं है, और जब तक एक देश दूसरे देश के अंदर घुस जाता है तब तक मार्केट ये सब जो टेंशन है उसको डिस्काउंट कर चुका होता है। तो 1990 में भी हमने देखा कि जो गल्फ इन्वेजन था 6 महीने से बातें चल रही थी, इंडियंस को इवैक्यूएट भी किया गया। पहले यूएस मार्केट टॉप आउट हो गया, फिर इंडियन मार्केट टॉप आउट हो गया, दोनों मार्केट नीचे की तरफ गिर चुके थे दिसंबर तक, और एक्चुअल इन्वेजन जनवरी में हुआ। यही चीज़ हमने फिर 9/11 के बाद भी देखी कि यूएस काफ़ी गुस्से में था, इराक के अंदर जाने की कोशिश करेगा, और 2003 में जब तक उसने ये कोशिश करी तब तक इमर्जिंग मार्केट्स बॉटम होके तेजी में आ चुके थे, और यूएस का मार्केट भी बॉटम हो चुका था। तो ये एक पैटर्न है जो हम देखते हैं, और एलियट वेव में इस पैटर्न के बारे में और भी डिटेल में बताया गया है कि जो मेजर बेयर मार्केट्स होते हैं वो ABC या 3 वेव्स में डेवलप होते हैं। उसके जो थर्ड वेव है इसमें सेंटिमेंट जो है पब्लिक मूड और पब्लिक का काफ़ी खराब हो जाता है, और जब ये खराब होता है तभी जियो पॉलिटिकल इवेंट्स, सिविल वॉर्स, अनरेस्ट, हर तरीके की अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि they are border conflicts, they can also be internal conflicts. So if they are internal conflicts and not border conflicts, also they amount to the same thing occurring because of a depressed mood among the people. In wave C, they are willing to take on a conflict with the powers that be, or with the neighboring powers that are. And so if we actually look at markets around the world, we really can't see deep bear markets right now, but Russia and some of the emerging market world have actually seen at least some degree of a correction. Okay, so you have seen the Russian market lose up to 20-30% from the peak that it made in October, and it is an ABC decline. That is what I wrote about last Monday when they declared that yes, Russian troops are being withdrawn and the market bounced back. But eventually the troops have moved in and the Russian stock market did break to a lower low than that level. The main point is that we were in wave C of that correction. Wave C was coming to an end. It was the terminal point by which usually such tensions reach their final culmination point. So if we have reached the final culmination point, then it should have erupted now as C is ending and we are about to turn up. And so we got that final sell-off, and the final invasion has actually happened. So what all this means is now that the invasion has happened, whether we call it an invasion or not, but that Russia has moved forward, and now you know what steps the rest of the world are going to take. The market has sort of discounted it. Okay, so my sense is that
once it is discounted, you start seeing a slow recovery. Now, whether you see it immediately, you see V-shaped, you see, consolidations along the way, because it's still a developing situation as far as what is happening in the European Eastern region. We'll continue to watch that. But we have reached the point where, a major event has already taken place. It is very much possible that the markets have done whatever they wanted to discount it. Now, unless you're going to get war of another level or more entry of other nations, which doesn't look like the case. This looks like something which will remain domestic and which will be called out by everybody else, eventually end with only sanctions being used as a financial weapon against Russia to slow down its activities. So what that means for financial markets, and as we have really seen, we've seen not too much of an impact in terms of currency markets, because eventually, like we said in the beginning, in terms of an economic impact, it's not going to be huge. It's really very, very sentimental. And if it's not an economic impact, you're not really seeing money move around the world from out of Asia or into Asia or out of Europe or Japan and so on. So currency markets were very, very stable. You saw a mild spike in the bond market, so yields went down a bit. And you saw the most important place was commodity prices, because Russia is also a producer of commodities. Places like energy, aluminium, nickel, and so on. These prices did see small spikes, and the expectation that if there's any kind of supply problem, then these commodities would get elevated. But of course, right now there's no clear sign that there'll be a supply problem on the commodity side. And so, are these price moves really about what we think, which is geopolitical, or is it really what I've been saying, the ongoing reflation trade? Because I think the euro is just waiting to start another move up. Maybe in some sense, all these geopolitical events strengthen the euro. As the euro advances, the dollar starts to fall, and that sort of supports commodity prices again. And then that takes us back to the main problem, which is inflation, and what is the Fed going to do about it. So by mid of March, we will have that outcome. To what extent do they move? They've never moved by 50 basis points before, but everybody started to discount 5 hikes and 8 hikes during 2022. And I think once they start the hiking cycle and give you clarity on what they're planning to do, then the markets will have discounted that, because that's how markets work. They are always scared of uncertainty. जब पता नहीं कि कौन क्या करने वाला है, अनसर्टेनिटी से मार्केट डरता है और डर से मार्केट गिरता है. तो ये चाहे जियोपॉलिटिकल इवेंट हो या फेड हो, अगर फेड ये नहीं बताएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, किस तरह करने वाला हूँ, सिर्फ इतना बताए कि हाँ मैं करने वाला हूँ, तो मार्केट में अनसर्टेनिटी है, और उस अनसर्टेनिटी को लेके मार्केट नीचे की तरफ कई बार पिछले 2 महीने में गिरा है. पर एक बार एक क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ भाई, इंटरेस्ट रेट्स कितने बढ़ने वाले हैं, सच में कहाँ तक जाएंगे, कौन से फैक्टर्स फेड ऑब्जर्व करने वाला है, और उन फैक्टर्स को फिर पूरी दुनिया मॉनिटर करेगी, तो एक सर्टेनिटी के साथ लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने लग जाते हैं और मार्केट वहां से फिर सुधरने लगता है. यही एक पैटर्न है, हमने कई बार दोबारा रिपीट होते हुए देखा है मार्केट्स में, और इसी पैटर्न को हम लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं. बट साथ साथ में ऐसा भी हुआ है कि अपने मार्केट में, अभी अपनी निफ्टी की बात करते हैं, कि निफ्टी जो है 2 महीने से 16,800 16,400 के नीचे गया ही नहीं है. 16,400 तो बना था दिसंबर के करेक्शन में, उसके बाद 16,800 के नीचे 3 बार आया, बट जा नहीं पाया. तो ये जो जा नहीं पाया, इट इज बिकम अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल फॉर दी निफ्टी. And when I say that market is holding up, most people remind me that see how stocks are falling, how can you say the market is holding up? And it's very, very amusing for me, because in 2015 to 2018, when I was spotting stocks and sectors that were crashing by the wayside, and the Nifty was holding up because of the BFSI trade and the FMCG pharma defensive holdout, the Nifty didn't fall that much, though it was advancing very slowly, but stocks continued to fall by the wayside. Initially by 20, 30, 40%, but in 2018 to 20, mid-caps lost 50 to 80% as well. The Nifty did not reflect it till the pandemic really came in. So it's really bizarre. I had to take blame for really not being able to call that index decline even though stocks crashed. Now people want to call me out for stocks crashing even though the index has not. So you can take your pick. Which fight do you really want to fight? You want to fight the Nifty fight, or you want to fight the stock fight? Both can be done very, very differently. अगर आप स्टॉक का पोर्टफोलियो संभाल रहे हो, तो स्टॉक्स में जहां जहां मोमेंटम वीकनेस है, मोमेंटम इंडिकेटर्स यूज करो. मैंने तो अपना प्रोप्राइटरी इंडिकेटर भी ट्रेड टाइगर पे फ्री में दुनिया को बांट दिया है. वैसे अच्छा आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड करो, वीकली मंथली चार्ट्स पे देखो, जहां पे मोमेंटम वीक हो रहा है थोड़े वो पोजीशंस हल्के कर लो, तो अपने आप
एक तरह से आपका पोर्टफोलियो मैनेज हो जाता है. सो आई हैव रियली नॉट सीन अ ह्यूज ड्रॉ डाउन वेयर द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज कंसर्न्ड, एंड दैट इज प्रॉब्ली व्हाई I really don't sense we are in a bear market as of now, because even in March 2020, the investment portfolio was falling every day, forcing you to think about selling, and that's what eventually happened, I think, almost to everybody, in terms of eventually selling everything, and then you reached a point where it was so oversold that you felt like buying everything anyway. So of course, if you didn't do that, that's a different story. But if you did that, then all you have to do for the last 2 years is always keep managing your portfolio. जो एज पे हर 1-2 महीने में अगर आप देखोगे कि आपके 10-15 स्टॉक है, उसमें 4 हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं, उनको हटा के आपने रिप्लेस कर दिया, तो आप सॉर्ट ऑफ बेस्ट स्टॉक्स में ही रहोगे और आपका पोर्टफोलियो आपको जनरली दिखेगा कि ऊपर की तरफ एडवांस हो रहा है, तो नुकसान कम है. अगर आप बहुत ही ऐसे वॉलेटाइल स्टॉक्स में गए और वो भी गलत समय में चले गए, तो डेफिनेटली हिट ले रहे हैं. और अगर आप उस चीज को मैनेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गलत स्टॉक में चले गए तो क्या हुआ, अगर वो गिरने लगे हैं तो आपको एग्जिट लेना है. तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई भी कर सकता है, पर ये करने के लिए थोड़ा मेंटल एजिलिटी चाहिए होती है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट कॉल्ड बिहेवियरल फाइनेंस, व्हिच डील्स विद आवर मेंटल कैपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग डिसीजन मेकिंग, एंड वेयर वी एक्चुअली फेल इन मार्केट्स इज टेकिंग दोस डिसीजंस. तो सच तो ये है कि 2-4 महीने से मार्केट ऊपर नीचे चल रहा है. ये भी सच है कि मैं सोच रहा हूँ ये खत्म होकर ऊपर की तरफ निकल जाएगा, और ये नहीं हुआ है. और ये भी सच है कि चाहे निफ्टी नहीं गिरा हो, स्टॉक्स में काफी करेक्शन आ चुका है, और इनफैक्ट इस बार मिड और स्मॉल कैप्स ने ज्यादा हिट लिया है. तो मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में ऐसा हो रहा था कि हर एक स्टॉक चलने लग गया था. हर एक स्टॉक जिसपे कोई भी नाम है, अगर ये स्टोरी है तो ये चल जाए, ये स्टोरी है, ये नाम है इसका, कोई भी एनर्जी से रिलेटेड हो, पावर से रिलेटेड हो, चाहे उसके ग्रोथ फैक्टर्स हो या ना हो. तो मार्केट ने इस करेक्शन में ऐसा किया है कि जो कंपनियां ग्रोथ साइकिल में नहीं है, वो एक बार के लिए बाजू में हट जाएंगी. वो इमीडिएटली नहीं समझ में आएगा, आपको बाद में समझिएगा कि हाँ मार्केट चल रहा है और ये 4 स्टॉक है जो नए हाइस नहीं बना रहे हैं, और अगर वो ऐसी कंपनियां हैं जिनमें वो ग्रोथ की जो ड्राइवर्स हैं वो नहीं है, तो शायद वो वे साइड में रह जाएंगी और इमीडिएटली नहीं चल पाएंगी, और जिनमें है वो शायद अभी भी चलते जाएं. तो एक क्लैरिटी आ जाता है इधर कि क्या चीज़ स्ट्रांग है और क्या चीज़ वीक है, और उसके एक्चुअल स्टॉक परफॉर्मेंस से आप समझ सकते हो. अगर आप अर्निंग्स नहीं फोरकास्ट कर सकते तो आप सिर्फ स्टॉक के परफॉर्मेंस से समझ सकते हो कि कहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है और कहाँ पे नहीं आ रहा है. तो उसको ऑफकोर्स थोड़ा टाइम लगेगा देखने में कि कहाँ पे परफॉर्मेंस आ रही है, और उसी की तरफ आप बैठे रहें. But in between, what ends up happening is while people are figuring out that which are the mid caps and small caps to back up the truck on, the large caps start doing better. And so this might be a phase where after strong outperformance of mid and large caps, and I'm not saying mid and small caps are done with and over with, the mid cap cycle might not be over, but they may go into a temporary underperformance phase where they go up less than the large caps. So it's possible that there is a shift towards large caps relative to mid and small caps that had become darlings. There may be some which will continue to perform better where there are clear-cut stories, but the others might fall on the wayside. So when you actually look at the relative strength even of a mid-cap index, you can actually take it to history also. In the 2000 bull market, between 2005 to 2007, for 2 years, there was an underperformance cycle. So the mid-cap indices may have appeared to hold on, but they actually went up less than the Nifty for a 2-year period where the large caps did better than the mid caps. And then eventually in the final run of 2007, everything went up again. And so that's when the mid caps caught up with the large caps pretty fast in a short period of time. So can something similar repeat over here is worth thinking about. It may be possible because we do know that valuations on the mid and small cap side had really stretched. And on the other hand, in the large caps, the Nifty valuations, when we look at 20 times earnings, after the correction and after the improvement in earnings for 2 quarters, they might not look too expensive, though it's not very, very cheap. But given the lower interest rates, जो ब्याज का दर है, जो कि RBI ने स्टेबल रखा है, तो अपने आप हायर वैल्यूएशंस के लिए तैयार हो जाते हो, और उस हिसाब से शायद ये वैल्यूएशंस सस्ती भी मानी जाए किसी से. तो एक तरफ आपके मिड कैप्स थे जो कि ओवर वैल्यूड हो गए, उनमें एक डीप करेक्शन आया, और दूसरी तरफ लार्ज कैप्स हैं जो कि काफ़ी कम वैल्यूएशन पे रिलेटिवली स्पीकिंग, तो शायद लार्ज कैप सेक्टर्स मिड कैप्स को नियर टर्म में आउट परफॉर्म करें, और बाद में इवेंचुअली एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, ये मुझे नहीं मालूम कि ये भी 2 साल का क्या साइकिल हो जाएगा, बट मिड और स्मॉल कैप्स में आपको ऐसी स्टोरीज के पीछे ही खड़ा रहना पड़ेगा जो कि सच हैं और जहाँ पे मोमेंटम बिल्ड हो सकता है, और जहाँ पे वो चीज़ नहीं है शायद वो बाजू में रह जाए. तो ये डिफरेंशिएट करना थोड़ा ज़रूरी हो गया है.
So the simple assessment at the end of it all is that we've had the big geopolitical event that has resulted in the extreme negative sentiment that we already had and has been retested, which means we've sort of shaken out a lot of the weak hands, people who would have had positions that they cannot hold on to. And add to that SEBI with more margin rules coming in from March, where you could use 75% of your delivery position as margin for futures positions or index futures and so on. Now it's brought down to 50%. So one more shot in the arm to try and reduce leverage in the system, as SEBI has been doing even last year. They've included so many margin rules that it has sort of reduced the market volume when we look at the number of shares traded on a day-to-day basis. So this is one more attempt at that, which sort of is shaking out. So apart from the market correction, I think even steps like these have shaken out the weak hands from the market, and you're sort of left with a market which is not overly leveraged or positioned, and which is another reason why the downside may be extremely limited. So that's all in this podcast and update from me. Thank you. शुक्रिया सुनने के लिए, एंड श्योरली इसको आप शेयर करें अपने सब दोस्तों के साथ जिनको इससे लाभ हो सकता है, और ट्विटर और यूट्यूब पे ज़रूर अपने मेरे इंडिया चार्ट्स के चैनल्स को फॉलो करें, तो आपको हर अपडेट जो है हमारे साइड से जो भी मैं पब्लिश करता हूँ यूट्यूब वीडियोस पे, वहाँ पे सब्सक्राइब करें। और जो ट्विटर हैंडल है यहाँ पे भी हम लोग काफ़ी अपडेट्स में डालता रहता हूँ, दोनों को फॉलो करेंगे तो आपको टाइम टू टाइम पता रहेगा कि मैं किस विषय पे बात कर रहा हूँ। Thank you. Nothing in this podcast is investment advice. Views on financial markets are in good faith to expand your understanding of how markets work. Please consult a registered financial advisor for the same. And yes, please share this podcast with everyone you think can benefit from this knowledge.